Day 27 September din Rural Rivers tema na Shejun Dulaka theme do Living Rivers, Reviving Ecology, Culture and Sustainable Livelihood tagishe. Timabur Signal Angami Village Council Brass Watchta Sramdan even organized Krishero Ek 3 Ek Kanda Ek Sat theme Pitor Bra Lushe. Timabur District Denis Paul Cricket Association Press Saturday Shamde Hodel Ornate Conference Hall Day 2025-2019 New Current Installation Ceremony Lushe. Boroland People's Front Bra Boroland Territorial Council Form Grubulese during the oath taking ceremony do October 3 day lobole schedule Kriginase. Assembly's pra event manager Shamkanu Mahanda Kun Zubin Karg Motu Jalaka accused Krigina Tagishe Dai Kilaf alag investigation launch Kriginase. Hello viewers, Mazimar Nikitan Arab Ningan Sabke Nltv Day swagat korese. Abi diado news kan detail de brasawa. Zinyabado Day 27 September 10 Rural Rivers tema na Shejun Dulaka theme do Living Rivers, Reviving Ecology, Culture and Sustainable Livelihood tagishe. Edu program do Nagaland Community Conserve Areas Forum aro Forest and Biodiversity Management Project lo de milig in organized kura lakase. Edu laka event day officials, conservation experts, bosti leaders, students aro community manukan shamiloshe. L Chinglem Konyak Extra Assistant Commissioner Bra Ecology, Culture aro Livelihoods laka majude link thagyado highlight kurishe. Tar bra jungle de khas kadya shikar aro nodi de kala tarika bra explosives aro chemical istimal kurigina fishing kuragi environment nimide khadara se kushe. Tar bra sop manuge noti suraksha kuribole zimendario thabole kushe. Obeyed Boheveswu Divisional Forest Officer Bra Tiku Tizu aro doyang Nishna Rivers laka castrol ke emphasize kurishe aro noti ke exploit aro Bollywood kura laka kilaf warn kurishe. Ivan Chimome Tizu Valley Biodiversity Conservation Livelihood Network laka liter brabi conservation or ecotourism bra alternative sustainable livelihoods create kurubule samtashe. Adu program bra sop noti ke preserve kurubule encourage kurishe cultural heritage ke tian de rakhigina. In the context of World Rivers Day, cultural work we should do when I speak on culture in the context of rivers and environment. Right, culture at one hunting and fishing also. In the context of environment now, culture we should do fishing and hunting as fellow of trees, timber, gas, katina, go banana. Kile beliau pakai guru mana tak sekali asal. Pulau pulau teman itu gas panen itu atas tanah itu gas katiakan. Ada juga motivation nak hiti katiakan. Those are some of the points which are related to culture in the context of today's event. Let us practice a feature where every river in our state runs clean and free, where wetlands thrive, and where young people celebrate festivals by the water without fear of pollution. Together, let us keep our river living, revive ecology, culture, and ensure sustainable livelihood for generations. Our very life will depend on how we conserve our environment. Why are rivers important? Rivers means water. Water means life. Life means biodiversity. So let me just try to connect the rivers with the thing that is ahead of it and the thing that comes after it. What comes ahead of the river? I presume it will be the forest, the biodiversity, the landscape as a whole. The landscape of an ecosystem, of a biodiversity area, the slope, the gradients, it flows and then it forms a river.
And when rivers are there, it is again connected to our livelihood. So let me try to put the river in the middle and then try to explain the things around it. We celebrate a lot of days. Environment, biodiversity, and specificity, certain even to the minute of an individual. But when we talk about river, it is a broad-based thing. It's not, we are not talking about World or DC River Day. Timber Nltv Village Council Brass watched the Stramantan event organized Krishi. Ek tin ek khanda ek saath team bidor balushi. Janjadi Vikas Samiti Bra Ran Kuri Thaga Rani Kaidin Lu Chatra Was Laga students pra cleanliness drive actively participate Krishi. Environment Sabara Kibule Miligina Kam Kurigina hygiene laga importance laga awareness spread Kurble laga Magzat pra Krishi. Timber District Dennis Paul Cricket Association Bra Saturday Shamde Hodil Ornate Conference Holi 2025-29 10-year installation ceremony Lucia. Dennis Paul Cricket Association of Nagaland Laga AJ's Pitorde Bra Association Function Kurekushe. Dennis Paul Cricket Federation of India Logod affiliate Ase Ministry of Youth Affairs and Sports Government of India Bra recognized Kurishe. Alag Office Paris Logod Doshimaran ke President Naro Visa Gole ke General Secretary Hoblen Da Kurishe. Doshimaran Bra young players karne opportunities tibo Kurishe. Aro December de district tournament Kuribo Koigina land Kurishe. Team ke registration Kurubla Nurat Kurishe. Nagaland State Association President Dr. Amos Likerbra Jasa Laga 17 team state tournament ke reflect Kurigina participation increase Kurigina grassroots cricket strength and Kurubule Laki Thaga ke highlight Kurishe. Wokha District Day first ever Banana Festival do 22-24 October dak host group lese. The festival do ekda bansal blend laga hisa se kude banana ke district laga khas crop banaw lese. One district one product initiative laga under de. Deputy Commissioner Vinay Kumar Brakuchegi the festival pra banana laga khedi ke modern banawle aredu laga economic value athable laga shorat ase. Wokha do Nagaland de सबसे dangor banana producer ase dukarne etu crop jinishe. Farmers can get festival the hisa lobel encourage krishi kilemane dahan laga support do district laga agriculture growth nimide bi khasase. How do you feel about Wokha hosting this festival for the first time? Yes, so we are very excited about this festival, and this would be not only for the first time for Wokha but for the Nagaland, and this initiative is part of our 5-year vision which we have launched for our Wokha district for banana. So this is part of that. Okay, coming to that, what inspired the idea of organizing the first ever banana festival in the district? So the initial discussion started in the DPDB meeting where we thought to have a product which actually represents the farmers of our district. So there were many products on which we had discussion, and we finally chose banana. Because banana is also the Wokha district is the largest producer of banana in the state, and plus it is widely grown all across the district. So on the basis of our research and discussion with various stakeholders, we chose banana to be our main crop. So can you kindly tell us what will be the key highlights of the 3-day festival? So during these 3 days, we are planning to invite almost more than 30 institutions, technical institutions from all across the country. The other highlight would be buyer-seller meet. We are also going to give a lot of exposure trainings and awareness to our farmers, along with some fun competitions which will happen during the festival. So we want to make banana not just as a subsistence crop, but a commercial crop, and banana not only as a fruit, but as a value-added product through which the farmers can earn more, and they can draw value from all the parts of banana.
So that is our goal from this festival. In one line, how would you describe your vision for Waka as the banana capital of Nagaland? So we actually want to use banana as a mechanism through which farmers can earn more. I think during this entire process, not only banana but all other agri and allied products will get. We will be training. We will be giving exposure. We will be also tying up with technical institute. So I think this will transform. We are seeing this as a transformative initiative for agriculture economy of our district. Yeah, so right now most of our farmers they are more into farming. We want to transform them into entrepreneurs and business person so that they can get more value from their products. So do you think banana can become Waka's identity the way tea is for Assam? I think that is the aim, that is the long-term goal, but I think that is a long way ahead, and we are just starting right now, so hopefully yes. For visitors, we want to remember that Boka is a place which is abundantly blessed with a lot of natural resources, and our hard-working farmers and the entrepreneurial spirit of this district, I think it can take us a long way in that journey of making Boka a prominent place in agri and allied businesses. Okay, so lastly, if you could say one Arunachal Pradesh Namsai laga boy P Mau Crown Surday 3:30 PM Nishnade Ekda tragic Kadnao Shekude Dada Tiago Aro Dada Magic Karimajide laga Lakishe Edu Kadnade Bra Duda Manu Sport Bra Morishegushe Rescue teams are police Kanchaka de Juldi Bungchigina investigate Kura Shurushe Victims kan la identity aro Kadna laga Karan Edabi Januale Baranai aro Namsai police for investigation launch Kurigina Sekushe. All Changlang districts today Sunenbra, Arunachal Pradesh, Chagmaro, Hajong communities pra scheduled tribes status Mangri Takapur, Karabra post Kuishekude, unethical, unjustified or unacceptable Koigina Matishe. Referendum rally June September 26 Joint Action Committee Bra Lushe Duki Jawab Tigina, ACDSU pra non-indigenous communities kanki, ST status the indigenous tribes kan laga rider identity trade and crew bokushe. Assam Police Bra Event Manager Shaima Kanu Mahandagun Zubin Kark Moidu Jalaga de accused Kurigina Tegishe Daikilaf Alag investigation launch Kurigina Sikushe Aredu Dohile Financial Crimes are money laundering Naga Kadna Brase Crime Investigation Department Bra Raid Marahamoide incriminating documents Council Kurishe Ekta firm de Bra Bishop Bankards companies are officials 28 Ford stamp seals are Binami properties records Council Kurishe Mahandagun former TGB Bhaskar Joy de Mahandalaga via Dino BMGSY road project irregularities te building a sekushe. CID Bra financial crime laws are BML under de Bra Nudun case register Krigina Sekude Mandalaga asset soft risk Kuri di Bokushe. We visit the break law side of Nltv.
Welcome back viewers, abning ang sa Nagamese Primetime. Boroland Babyl's Front Bra, Boroland Territorial Council Farm Kribule, Sajin to all taking ceremony do, October 3 day level schedule Kriginasi. Arredo Ili Council election the landslide victory biche halakase. BBF to 40 council seats Majude, 28 Judice, United People's Party, Liberal do, Satta, BJP Bra, Banchta State or Congress to, Ekta seat bichi Dianai Kushe. Assam Governor Lakshman Prasad Acharya ke Lok Babiche, BBF leaders pra Madhi Chamila, development or youth unemployment of emphasize Krishi. Election 20 September 22 day, Boroland Territorial Region Day, Banchta District se Luce today 40 seats day, 316 candidate contests kura tiki by Shigushi. Bihar Navaradi Sunday de ekda 20 sal aspas Jawan youth laga lash paise. Lash to district ekda go down laga bitor de bra paise. This is ki Bush Panshu 21 sal ko gina bejan Grisharo daido local doctor laga grandson se. Police kan suspect kurese ki kuri kata laga printer July gina dalaga kolado kadishe ko gina. SP Abhinav Tiwan Brakushegi tahan ki lash over cover by gina jaga de Bungjisharo this is ki bejan kuri gina lash ko recover kuri lushe ko gina janai. 5-5:30 बजे टाउन थाना को ये सूचना प्राप्त हुई कि टाउन थाना अंतर्गत बीएड कॉलेज के पीछे एक गोडाउन है जहाँ पे एक व्यक्ति की जो है वो मृत्यु हो गई है। उसी के सत्यापन में जो पुलिस यहाँ पे आई तो पाया कि ये जो व्यक्ति हैं करीब 21-22 साल के जो हैं पुष्पांशु शंकर जिनका नाम अभी सत्यापित हुआ है नारदीगंज के रहने वाले हैं उनकी ही यहाँ पे जो है मृत शरीर पुलिस को मिला है। जितना अभी तक पता लगा है कि जो एक लकड़ी काटने वाली मशीन होती है उसी के माध्यम से गले में एक कट है जिसकी वजह से जो है वो ब्लड लॉस से डेथ हुई। 5-5:30 Haryana Indana Village Node Saturday the Red Marahamoide locals pra Badur Bilaro air firing Kushuli officers kunbi jogan bana kushi. Raido Punjab te bra anya laga kari de link thapor krishi kushi kude suspect do Azad Shahid aro Shahrukh Khan ase. Female officer laga mudud logina police pra ekjun mahila detain kurigina se. Reinforcement do madigina se ro 13 manu kude tinda mahila bi shamil ase dahan ki graftar kurigina se kushi. Hala duida do under control de Sero Chanpin chule se kushi. कल हमारे पास हमने 3 महिलाएं और 10 व्यक्ति अरेस्ट किए थे जिनमें 3 महिलाओं को जुडिशियल हमने रात को ही भेज दिया था। 10 व्यक्ति में जिनका हम कुछों का पुलिस रिमांड ले रहे हैं और कुछों को जुडिशियल भेज रहे हैं और हमारी जो गाड़ियां पर भी नुकसान हुआ है हमारे ऊपर फायरिंग भी हुई है और दराती से भी हमारे मुलाजमों के ऊपर वार किया गया है जिसमें वहाँ पर एक हमें पिस्टल मिली है वो बताया जा रहा है। अभी उसके बारे में हमारे पास कोई लाइसेंस के बारे में या कोई भी चीज़ के बारे में नहीं पता लगा है क्योंकि हमने उसको भी कब्जा में लिया है। कितने मुलाजिमों को चोट आई है, क्या उनकी स्थिति ठीक है? हमारे 4-5 मुलाजिमों को चोटें आई हैं जो अब वो उनकी स्थिति ठीक है जो इलाज उनका कल हमारे पास हमने 3 महिलाएं और 10 Delhi Police Bra Amritsar de Bra Gabal Rajiv 35 sal और Sanya 34 साल की गिरफ्तार कृषि Tarjun Bra customers निचना दुकान कांदे जाएगा ज्वेलरी खान चोर कृषि पुलिस हिसाब दे Tarjun में ड्रा के देख तकी जरो Tarjun Bra अप्रैल Bra शुरू होएगा पुरारी बस स्ट्रीम विहार खान मार्केट और द्वारका जगह खान दे कम से कम 7 निचना जोर कृषि राजीव Bra दुकानदार खान के डिस्ट्रिक्ट करे था मैंने Sanya Bra ज्वेलरी खान चोर कृषि और Tarjun के थ्री बनाती बनी में दे कपड़ा भी बिशी चेंज करे और फोन नंबर भी बिशी चेंज करे थके कुछ Tarjun लगा रेस द्वारका दे जुलाई दे चोर करा लगा इन्वेस्टिगेट करा हम होशे कुछ सीसीटीवी फुटेज और कैब बुकिंग करा लगा ट्रैक करे किना थुरुशे पुलिस प्रा Tarjun लगा हाथ प्रा कोल्ड ज्वेलरी और केश कान थुरुशे कुछ कपल प्रा क्राइम ओवर कन्फेस कुछ और जानबीन जुले से कुछ Self-styled Godman, Jaidan Nayanta Saraswati ki Delhi Private Institute de Bra 17 Mikey students can sexually harass Krabra, Girafter Grigina se, Aro Sunday de Cord Laga Samna de Brodius Krishe. Delhi Police Prada ki bunch tin karni custody de Raki Bogushe, alag paying account de Bra, rupees 8 crore freeze Grigina zero, fake documents July gina rupees 50 lakh post FIR withdraw Krishe Gushe.
Investigation kurigina jani bashegi daibra students kange via message kan badai share dahan ahaja gura kan trace kurigina radi de turigina harass kurishe kushe. Police pra dalaga hat pra fake visiting card speed research to bra United Nations are BRICS telling a segwegina jani bashe. Prime Minister Narendra Modi bra Monday in New Delhi de BJP laga nudun office inaugurate kuribole se. Delhi BJP Chief Virendra Sachdeva bra office pana khatam kura karne party workers congratulate kurise. BJP National President JB Nadda bra June 2023 de foundation ceremony perform kura yad kurise. Sachdeva bra even the media ke invite kurise. Even the BM Moti, Delhi CM, Union Ministers are thousands party workers shamil hobo kurise. मेरा ये मानना है कि उन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, इच्छा शक्ति, उसका परिणाम है आज हमारा अपना एक स्थायी पता दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं को मिल गया है। कल जब माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ होंगे, माननीय मुख्यमंत्री हमारी दिल्ली की होंगी, हमारे सांसद, हमारी दिल्ली की सरकार के मंत्री, केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी, ये सब साक्षी होंगे उस ऐतिहासिक पल के जो हम कल देखने वाले हैं। और मैं आप सभी मीडिया के मित्रों को भी आमंत्रित करता हूं कि आप कल आएं और इस ऐतिहासिक पल के भागीदार। मेरा ये मानना है कि उन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद RSS laga 100 sal buran nohagi de BMOD bratahan laga selfless seva laga spirit aro discipline ge darif kuchar kushegi nation first to sub volunteer laga sabse dangor priority ase tabra kushegi 1925 pra loigina RSS pra desh ki ideological slavery pra azad kuri dishi aro disaster samoy modut pungchai gina se BM laga 125th month ke bate Modi Brandra Jayanti 2nd October de khati kini bole anurat kushi aro chat mahaprav ke UNESCO laga intangible cultural heritage list se shamil kuribole kushish kuri thakya opor janai dise tabra mahila navy officers ke bi kotha kurise kun khan navika sakar bari karma de himat dikhase Modi Bra Indian festival ki praise kurise culture ke zinda rakhya nimide शताब्दी की ये यात्रा जितनी अद्भुत है, अभूतपूर्व है, उतनी ही प्रेरक है। आज से 100 साल पहले जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी, तब देश सदियों से गुलामी की जंजीरों में बंधा था। सदियों की इस गुलामी ने हमारे स्वाभिमान और आत्मविश्वास को गहरी चोट पहुंचाई थी। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता के सामने पहचान का संकट खड़ा किया जा रहा था। देशवासी हीन भावना का शिकार होने लगे थे। इसलिए देश की आजादी के साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण था कि देश वैचारिक गुलामी से भी आजाद हो। ऐसे में परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने इस विषय में मंथन करना शुरू किया और फिर इसी भगीरथ कार्य के लिए उन्होंने 1925 में विजयादशमी के पावन अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। डॉक्टर साहब के जाने के बाद परम पूज्य गुरु जी ने राष्ट्र सेवा के इस महायज्ञ को आगे बढ़ाया। परम पूज्य गुरु जी कहा करते थे, राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम न मम, यानी ये मेरा नहीं है, ये राष्ट्र का है। इसमें स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव रखने की प्रेरणा है। गुरुजी गोलवलकर जी के इस वाक्य ने लाखों स्वयंसेवकों को त्याग और सेवा की राह दिखाई। त्याग और सेवा की भावना और अनुशासन की सीख, यही संघ की सच्ची ताकत है। आज आरएसएस 100 वर्ष से बिना थके, बिना रुके राष्ट्र सेवा के कार्य में लगा हुआ है। इसलिए हम देखते हैं देश में कहीं भी प्राकृतिक आपदाएं, आरएसएस के स्वयंसेवक सबसे पहले वहां पहुंच जाते हैं। लाखों लाख स्वयंसेवकों के जीवन के हर कर्म, हर प्रयास में राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट
कि यह भावना हमेशा सर्वोपरि रहती है। भारतीय नौसेना की 2 बहादुर ऑफिसर्स ने नाविका सागर परिक्रमा के दौरान ऐसा कर दिखाया है। उन्होंने दिखाया है कि साहस और दृढ़ संकल्प होता क्या है। आज मैं मन की बात के श्रोताओं को इन 2 जाबाज ऑफिसर से मिलवाना चाहता हूँ। एक है लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और दूसरी है लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा। मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी है कि भारत सरकार भी छठ पूजा को लेकर एक बड़े प्रयास में जुटी है। भारत सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट यानी यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है। छठ पूजा जब यूनेस्को की सूची में शामिल होगी तो दुनिया के कोने-कोने में लोग इसकी भव्यता और दिव्यता का अनुभव कर पाएंगे। कुछ समय पहले भारत सरकार के ऐसे ही प्रयासों से कोलकाता की दुर्गा पूजा भी यूनेस्को की इस लिस्ट का हिस्सा बनी है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। गांधी जी ने हमेशा स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया और इनमें खादी सबसे प्रमुख थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद खादी की रौनक कुछ फीकी पड़ती जा रही थी, लेकिन बीते 11 साल में खादी के प्रति देश के लोगों का आकर्षण बहुत बढ़ गया है। पिछले कुछ वर्षों में खादी की बिक्री में बहुत तेजी देखी गई है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि 2 अक्टूबर को कोई न कोई खादी प्रोडक्ट जरूर खरीदें। शताब्दी की ये यात्रा जितनी अद्भुत है, अभूतपूर्व है। Gujarat Saturday Radik da Dagadwar storm bra hit Kurishe Jundu bra Navsari district Chiglai Rade Bishi Bia bra fek Kurishe Bandroda Bosti Nishna do Bia Hoijashe Ek sober kor laga roofs do Dangor Hawa bra Uragina Luidishe Bishi Jun Jogon Baisha ro Chico ro Mango Cast laga farm bi Bia Kridishe Locals kan government ke pat bra Mududa ro support nimide Hutiase BJP leader Buralal Shah Jagade visit Kurisha Kushegi storm the Bishi Dagat Wardagishi Jundubra Kor Kasar Janwar Khan Gen Nuksan Kritish. Vice President C.B. Radhakrishnan Bra Sunday de Kushegi Manukan Alag Basha Lebi Tharma Laga Consebra Country United Rakibulede. Tire Briduri Markdo Unmeisha International Literature Festival Batnade Valedictory Function of my trace Kushi. Kidia Dagi Hudisha India do Common Pasha Natagina Kina United Asequina Edu Homoy Dabra Samjeshe Ki Tharma Bra Sopki Kanekre. Edu lead Dalaga first visit as a Vice President Saparo Dagi Governor or Deputy Chief Minister Bra warmly swagat Kushi. Lumesa, aptly named, signifies the awakening or unfolding of new ideas, new narratives and fresh perspectives. ये एक उत्सव है, यह एक समावेश है जहाँ पे नई बातें, नई जागरण की चीजें हो रही हैं ताकि लोग अपने विचारों को साझा कर सकें और एक दूसरे से नई बातों को, नए विचारों को सीख सकें. It is a celebration of diversity in thought and an affirmation of literature's unique role in bridging divides, whether they be of language, culture, geography or ideology. ये एक ऐसा महोत्सव है जो कि एक साथ लोगों को साथ में लाया है, विभिन्नताओं को भेदते हुए एक साथ जोड़ने का काम कर रहा है और हम एक दूसरे से मिल पा रहे हैं. One dignitary from Europe asked me how India is so united. In spite you don't have a common language, you speak different languages. My answer was only one thing to him: we speak different languages, but we live on one single concept, that is dharma. एक यूरोप के मेरे मित्र ने पूछा था कि तुम्हारे देश में तो इतनी सारी भाषाएं हैं, इतनी विभिन्नताएं हैं, फिर भी आप इतने ज्यादा एकता के सूत्र में कैसे बंध पाते हो?
और उसमें मेरा आंसर था, मेरा रिप्लाई था, मेरा जवाब था कि हम लोग यहाँ पे भाषा से नहीं बल्कि धर्म से जुड़े हुए हैं और वो सद्भावना है। I am sure and I am confident that all your literature knowledge, all your writing capabilities, all your talents will strengthen Ek Bharat, Shrestha Bharat. That is the concept which we want to live on. मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस महोत्सव से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपके जो ज्ञान है वो समृद्ध हुआ होगा और आप इस ज्ञान को फिर जाकर दूसरों के साथ साझा कर पाएंगे। मेरा ये पूर्ण विश्वास है। I have no doubt that Umesha will continue to be the cornerstone of literary culture, attracting future generations of writers, thinkers and readers, and all the existing your write-ups will leave a good legacy for the future generation. मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्मेष सभी चिंतक हों, चाहे साहित्यकार हों, साहित्य प्रेमी हैं, जो लेखक हैं, सभी को एक साथ यहाँ आने का मौका मिला है और साथ ही साथ आज ये उन्मेष आने वाले भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बना होगा। India is एक and India will. Tamil Nadu Career Day, September 27, Assembly Habiche, Tamil Nadu Health Secretary B. Senthil Kumar Brat, 39 Manu Murshikagina confirm Kushe, Kude 17 Maiki, 13 Motaro, Nota Pachatikishe. Adi Majde, 30 Manu Laga Boss Mortem the Law Kotamoikina, Kandan Law de Titi Shushe. Jogumba Majde, 26 of treatment Lagina, discharge Kritishe, Ara 67, the Diabe Government Hospital Day, hospitalized. Kude Duidado, critical condition de Tagabra, advanced care Nimide, Madurai Medical College Hospital Day, Chief Kriginase. Karur Government Hospital Day, 200 of doctors can tweet their segushe. Unfortunate incident, 39 deaths have been reported, 17 women, 13 men, 4 male child and 5 female child. Out of 39, postmortem for 30 people have been completed and handed over. Remaining postmortem is going on. With regard to remaining admissions, 26% were treated in OP and they were discharged. There are 67 people who are admitted in as IP patients, and out of that 2 patients are a little bit critical, so all others are stable. So one of the patient is being shifted to Madurai Medical College Hospital for higher treatment. How much doctors have been brought from So already this Medical College Hospital, there are more than 200 doctors working here. Apart from that, in the nearby Medical College hospitals, around 150, 149 doctors, nurses, other forensic experts, they have been brought. So do you think there is adequate medical facility here, or do you need any additional assistance? No. Actually, we need, because it was night time and immediately we have to mobilize, but this hospital is endowed with sufficient number of experts, but even then, because large number of deaths, so post-mortem has to be carried out by forensic experts, so we have mobilized. Then, because in the initial stages it was difficult to assess the extent of, so that's why we have mobilized as a precaution. So, and all the post-mortem bodies are being shifted to their doorsteps through hearse vehicle. Unfortunate incident. Kashmir Day, World Tourism Day Homoy, Kashmir Manukan Tourism Do, Wabas Shuru Hobolea Karake, Segili Willis, 16 Jagachun do Bon Higina Taishe, Eduhan Wabas Kulishe. The Lake Day Egda Shikara operator Rahim Barakushiki, April Moina Bra, Jivan do Bishi Biahoje, share visitors Natagina, Tourism Day do Bishi Kali Mesos Kurehushe. Hotel Malik Danvira Mate Shabra Kushegi, Kashmir de Bishi Jun Tourism Day Dibendagi, Balgam Hamla Bishi Day, Doris Lakindi do Bishi Kirija, share Bishi Jundo Tukpeshe. Tabra visitors Kangi, Anurat Kushe, Jagado visit Krublenimide. Locals can Biswas Kurasegi, Wabas Chana Mana. Jaka Kulishe Gwile, Doris Khan के न्यूबर इकोनॉमी रिकवर करबले मुद्दती बगुशे. देखिए एक्चुअली क्या है, फर्स्ट अप्रैल चल रहा था, अप्रैल में जो हालात बिगड़ गया था यहाँ पे, उसकी वजह से हम लोगों को बहुत मुश्किल से सामना करना पड़ता है अभी तक.
हमारे को भी अप्रैल से 6 मंथ तो हो चुका है। हम भी उम्मीद में बैठे होते हैं, हम शिकारा चलाते हैं, कोई हाउस बोट का ऑनर से सबका उम्मीद होता है नहीं टूरिस्ट सीजन मार्च से चालू हो जाता है। तब से हम भी इंतज़ार में बैठे हैं। यहाँ पे आज टूरिज्म डे भी मनाया जाता है। टूरिज्म डे तब मनाया जाता था जब टूरिस्ट होता था यहाँ पे, जब टूरिस्ट है नहीं तो टूरिज्म डे क्या मनाया जाएगा। आप देखो हम लोग सब बैठे हैं अभी, हमारा भी पूरा उम्मीद है टूरिज़्म यहाँ आए। और जो बहुत सारी जगह कल से इनने छोड़ दिया, अभी बहुत दूध पोथरी जैसे कि क्लोज़ है, अभी यूस मार्ग भी है अभी क्लोज़ है। हम टूरिस्ट को वेलकम करें, वो आए यहाँ पे एंजॉय किए, क्योंकि ये विंटर सीज़न है। विंटर सीज़न में अलग नज़ारा होता है डल लेक या किसी जगह में भी, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, जो मेन पॉट्स है वो छोड़ा जाए, क्योंकि तभी टूरिस्ट को इंटरेस्ट बढ़ेगा कश्मीर आने के लिए। जब मेन ही बंद रहेगा तो टूरिस्ट का कहाँ इंटरेस्ट बढ़ेगा, वो बोलेगा मैं कश्मीर जाऊँ वहाँ पे क्या देखूँ, सारा प्लेसेस बंद है। देखिए पर्सनली अगर हम बोले तो हमें जो कश्मीरी जो है, हमें तो 99% जो है टूरिज़्म इंडस्ट्री के ऊपर ही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बैक स्टोरी देखेंगे जो 22 अप्रैल को हालात हुई यहाँ पे, तो उसके बाद जो हमने सहा यहाँ पे, हम कंडम करते उस चीज़ को। तो एलजी या चाहे सेंटर गवर्नमेंट हो या यहाँ की लोकल गवर्नमेंट है, उनको हमारे ऊपर कुछ सोचना चाहिए टूरिज़्म के लिए। क्योंकि देखिए हमारी जो रोज़गार से, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, होटल हो, शिकारा वाला हो, हाउस बोट एसोसिएशन हो, सब डिपेंडेबल है कि टूरिज़्म के ऊपर। तो इन्होंने हमें 2 बार बोला कि टूरिस्ट आएंगे, रिकवर हो जाएगा। तो अभी तक हम जैसे देख रहे हैं तो हमारे ऊपर तो वैसे ही हालात बदतर ही होते जा रहे हैं। तो अभी हमें यही गुजारिश है कि टूरिज़्म बैकअप वापस करे, कि हमारा रोज़गार भी चले। जैसे कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है कि 2014 से हमें यही हालात देखते आ रहे। तो हाँ ओबियसली 5 साल से हमने जो यहाँ पे देखी थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई J&K में। तो जैसे टूरिज़्म बूस्ट हुआ था तो लोग सुधरने लगे, मतलब हमारा काम भी अच्छा चल रहा था। तो उसके बारे में तो हम सेंटर के लिए यही रिक्वेस्ट करेंगे, वैसे ही दिन अच्छे आए और सबका अच्छा ही। New Delhi High Commission of Bangladesh ने एक खास इवेंट हिल्सा मास का सीजन लगा शुरुआत के मनाइছে। हिल्सा तो बांग्लादेश नदी ब्राइक दा जना मना मास से और बेंगली कल्चर निमित्ते बिशि खास से और मास तो दा लगा टेस्ट और सॉफ्ट मीट निमित्ते जानी जाए। इंडिया दे फेस्टिव सीजन दो शुरू होता है मैं बांग्लादेश मेघना नदी ब्रा फ्रेश हिल्सा तो दिल्ली दे अन्ही गिना बुंगचिছে। Diplomats, politicians, artists और business leaders kan bra mas to enjoy करिছে और बांग्लादेश और इंडिया मजदे लगा शेयर कल्चर के मनाइছে। होदाय साल बांग्लादेश ब्रा इंडिया दे दुर्गा पूजा नबुंगचा के दे हिल्सा के बधाई जुंदु ब्रा ट्रेड ते मुदुते और फेस्टिवल दो बिशि खास बनाई दे। We just thought of bringing over Ilish all the way from Meghna River in Bangladesh, essentially as India goes into festive season, to reach out to our friends in India, Delhi and all around, whether someone is vegetarian or non-veg, to really bring over something which is something very deeply emotional to a Bengali or non-Bengali, because there's a different third category I call that this is fishitarian, between veg and non-veg. And I just thought that over fish we sit down, have conversation, but even if we don't have conversation, it's all about celebrating life. Ilish, as we call in Bengali, Hilsa, this has been from culture to agriculture everywhere, if not even in politics. But this evening, this noon at the High Commission, we thought that we get some from cultural field of politics, government, every business. We bring everyone to create conversations over a fish, which is not only quintessential Bangladeshi, because we produce 86% of the global catch of Ilish, but this is also a fish which is very high in nutrient quality and everything, but the taste is unparalleled. I often say that bonier a fish, the tastier it is. पाकिस्तान दी लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट थगिले भी होदाय साल 1000 मनु निशना रेबीज प्रामुरिया बिशी भागदो बचाखान थगे गुशे चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन डॉक्टर मोहम्मद इरफान हबीबरा इदु बीमार दो रूरल आरो लो इनकम जगह खान भी बिशी लगी कुदी बचाखान की स्ट्रेट डॉग्स प्रा कामुरी गिना बॉस एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस लोबले देरी हो जाय गुशे रेबीज तो जल्दी ट्रीटमेंट लुशे होले 100% प्रिवेंटेबल असे गुशे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ब्रा रेबीज तो कुदाब्रा कामुरी गिना लाइक गुशे
Poland kan bra olap samay nimide tahan laga airspace isado bond kushi Ukraine de Russian hamla hua bra aro jades ke potential area ki surakshit rakibole nimide Ukraine kan air raid alerts tagishe kile kule Russia bra strikes launch kushi Nadoro Poland kan bullish airspace se Russian drones ke rukha station to bra direct clash ke mark kushi Russia bra kushi judi hamla huishe kuile tahan bra kara jawab dibo koigina thamki dishe Ladohan Baltic the defense boost Korea Denmark the drone hamla hua bichide to the airports so temporarily bond Korea se Norway or Germany brabi drone sightings report Korea aro must put drone defenses lagi kushe EU can borders protect kribule nimide drone wall bonabule plan Korea se will be Russia bra ko segi edu bra tension so thai dibo koigina New York the External Affairs Minister Ace Chechengar bra future workforce karne technology or connectivity atop krigina nudin arrangement krubul emphasize kushe Chechengar bra kushe India bra Latin America ro Caribbean lot economic ties must put punaw engagement expand krese Chechengar bra self reliance or technology day India bra focus krese kushe What do you do in this very turbulent atmosphere? I think particularly for large countries, it is important to build capacities, to be more self-reliant. That is very much the focus today in India. And because you said, you look at it from a perspective of technology, I think in many ways, Mr. Krishnan speaking before us gave some of the answers. And what, we speak of multipolarity as though it's something that will happen. You have to build multipolarity. And you build multipolarity by building national capacities. And when you build national capacities and have national experiences, some of it is transposable to other people who may relate to it. So, for example, if you take DPI, digital public infrastructure, there are many other societies who find the Indian model of DPI, frankly, far more absorbable and relevant and transposable than a European model or a American model of how to run a more digital life. Now, it can be big things, it can be little things. What we have seen, because you spoke again earlier about South-South cooperation, many things we've done in India. If you have something like a drinking water mission, or you have taking electricity to every home, each one of these efforts actually has scaled up capacities in India, has created businesses and companies and people in India who can take those capabilities abroad and today actually drive South-South cooperation. So you have a country like India still at $3,000 per capita income, which actually has assistance programs in almost 80 countries in the world. And in some cases, these are billion-dollar programs where, what we have done in India, we have taken out of India to some other country. So to me, technology, self-reliance, multipolarity, South-South cooperation, they're part of one basket, and that is part of the response to what is happening, the point number one. Point number two, which we haven't spoken about today, this world which we are talking about will require a global workforce. Where that global workforce is to be housed and located may be a matter of a political debate. But there's no getting away. If you look at demand and you look at demographics, demands cannot be met in many countries purely out of national demographics. This is a reality. You cannot run away from this reality. So how do we create a more acceptable, contemporary, efficient model of a global workforce which is then located in a distributed global workplace? I think this is a very big question today which the international economy has to address. New Delhi bra Indian cricket team fans kan tahala team over bura confident na sekun kan Sunday de Pakistan khilaf khilibo. Dahan akhara ke segi opener Abhishek Sharma bra score kribo or bowler Jasprit Bumrah do pal bra khilibo. Ekda fan bra gushegi Abhishek Sharma bra ekda century score kribo or Bumrah bra 3 wickets lobo. India do jidibo kushar India kan tournament de Bishi Game Stadium se or Dubai International Stadium de final de pal bra khili thakibole mona se gushi.
हम पूरे इंडिया वाले बहुत एक्साइटेड हैं चौथी बार लगातार पाकिस्तान को हराने के लिए। आज तक तो हमसे वो किसी चीज में आगे नहीं हो पाए हैं और ना ही वो आज होने पाएंगे। हमारे पूरे 136 करोड़ देशवासियों का पूरा हमारा सहयोग है। हमारे जो आज 11 और 15 खिलाड़ी कोच हैं वो अपना पूरा 100% देंगे और आज हम एशिया कप की ट्रॉफी जरूर लेके इंडिया वापस घर आएंगे। बात करें अभिषेक शर्मा की फॉर्म की, काफी अच्छे फॉर्म में, और आप इस प्लेयर से उम्मीद रखते हैं कौन सबसे ज्यादा अच्छा? आज मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव 80 से 90 रन के बीच में स्कोर करेगा और जसप्रीत बुमराह कम से कम 3 विकेट लेगा। एक्साइटेड है हम, तो देखते हैं उसे। और इंडिया जीतता भी आ रहा है पाकिस्तान से। अभी तक 3 मैच हुए हैं, अभी तीसरा मैच है ये, तीनों जीतेगा ही, वो जीतेगा। कौन से प्लेयर को लगता है कि एक्स फैक्टर का रोल प्ले करेगा, सबसे ज्यादा रन मारेंगे, विकेट्स लेंगे? अभी सूर्य ज्यादा लग रहा है कि सूर्य ज्यादा खेलेगा। बात करें थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर का स्ट्रगल चल रहा है, अभी उतना फायर नहीं कर पाया, क्या लगता है आज मिडिल ऑर्डर किस तरह? अक्षर पटेल थोड़ा अच्छा खेलेगा, बॉलिंग भी अच्छी थोड़ी करा सकते हैं वो। बात करें अगर इंडियन टीम की, क्या लगता है आज को कौन सबसे ज्यादा अच्छा खेलेगा, किस प्लेयर पे बैंक कर रही है? आई थिंक दुबे 5-6 विकेट निकालेंगे एंड अभिषेक तो है ही हमारा। थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर की बात करें, थोड़ा सा भी चला नहीं है, उस तरीके से फायर नहीं किया, क्या लगता है आज चलेगा क्या? वो बस प्रैक्टिस कर रहे थे आज के लिए। और अभिषेक शर्मा का लॉ ऑफ एवरेजेस मेंटेन रहेगा या फिर कुछ अलग ही? विथ ग्रेस ऑफ गॉड सेंचुरी आएगी आज। क्या पाकिस्तान मैच है आज, कितना एक्साइटेड है? बहुत एक्साइटेड है मैम। हम लोग रोज पिछले बार भी देखे थे मैच जिसमें अभिषेक शर्मा ने अच्छा Nltv Nagamese Primetime खबर दे दुकान तक दुनिया न्यूज़ और अपडेट